Hello everyone. So you know that I am doing previous year questions from state PSC examinations such as UPPCS, Bihar PCS, etc. We are dealing the Indian polity and topic will be the preamble. Okay, so we have done a lot of videos earlier. So if you are new in this channel, please watch those videos as well. It will really help you. So we are doing last 30 questions. Okay, this is about myself. So let's see today's questions. Okay, so here we can see like this question is already came in IAS exam. Anyway, we will read here. See, there they have mentioned completely the preamble itself. Okay, you can just read the whole text is nothing but is the preamble. Like, we the people of India solemnly resolve to constitute India into sovereign, socialist, secular and democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our 26 in our Constituent Assembly, this X do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. अब ये जो X यहाँ पे दिया हुआ ये क्या है? Okay, so these are the four options which is given. 26 day of January 1950, 26 day of November 1949, 26 day of January 1950, none of the above. Okay, so if you have read the preamble, you can easily answer this question. Okay, so parallelly I am doing Indian polity by M. Lakshmikant. Okay, so recently I have uploaded one video which is from the preamble chapter, which is chapter number 4. There we are talking about the preamble. So in that this date is given, which date. Okay, so anyway, this is just information. I am doing the Indian polity complete lecture series by M. Lakshmikant as well. But wherever you will see this preamble, you will get this date. Okay, it is nothing but it is 26th day of November 1949. Okay, the answer will be B. So you can see here the 26th November 1949. Okay. Yeah, next question. What was the exact constitutional status of Republic on 26/1/1950 when the Constitution came into force? Or a democratic republic, or sovereign democratic republic, or sovereign secular डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अब देखिए ये प्रियम्बल की बात कर रहा है कि जो प्रियम्बल एप्लीकेबल हुआ था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था ऑन दिस डेट, देन व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ प्रियम्बल. ठीक है, तो इट इज एक्चुअली बी, सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. देखिए सेकुलर जो था, सेकुलर सोशलिस्ट, ये सब जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था. दिस विल नॉट बी द आंसर, बट सोवरेन इज आल्सो देयर, सो द आंसर इज बी. ओके, सो द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. इसकी बात मैं कर रहा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऐड किया गया था. ठीक है, so the answer is B. Next, what was the exact constitutional status on India on 26 January 1950? अब ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, but this is in IAS exam. Previous question that came in some of the PSCs. So again the same question: democratic republic, sovereign democratic republic, sovereign secular democratic republic, or sovereign socialist secular democratic republic. So obviously the answer will be B, sovereign democratic republic. ठीक है, अब देखिए जो लोग थोड़ा सा अमेंडमेंट को ध्यान नहीं देंगे, इसको गलत करने का चांस काफी ज्यादा है. हमें अगर रिसेंट टाइम पे अगर आप पढ़ते हो प्रियम्बल, तो ये चीज आप मार दोगे. जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि ये हमारा
दिस इज गिवन इन द प्रियम्बल इटसेल्फ, ठीक है, बट दिस विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये जो टर्म नहीं था। ओके, ये बात हो रही है इस डेट में, इस डेट में क्या स्टेटस था। ओके, सो इट वाज सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड secular and socialist were added to preamble on the Indian Constitution by 39 Amendment Act, 41st Amendment Act, 42nd, 44th. Okay, so you can easily answer this question. This is actually 42nd Amendment Act. Okay, इसके थ्रू हमारा ये जो वर्ड था सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड हुआ था, ठीक है, सो द आंसर इज सी। Next, by which names our country maintained in the Constitution? Bharat and India, Bharat only, Hindustan and India, Bharat, Hindustan and India. अब देखिए ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, सो इट इज एक्चुअली ए इंडिया दैट इज भारत, ऐसा उसमें बोलते हैं, आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, सो आर्टिकल 1 में बोलता है इंडिया दैट इज भारत, okay, shall be union of state, article 1, okay, India that is Bharat shall be union of state, so the answer is A. Next, in the context of preamble on the Indian Constitution, which of the following sequence is correct? Okay, अब देखिए इसी वजह से मैं उस वाले जिसमें मैं प्रियम्बल की लेक्चर सीरीज करा रहा हूँ, वहां पे मैंने बोला कि आप प्रियम्बल को कई बार पढ़ो, उससे आप याद हो जाएगा। अब उसमें जिस सीक्वेंस में ये सब चीजें दी हुई हैं वो हमें बताना है, रिपब्लिक, पीपल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, यूनिवर्सल, सोवरेन, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें यूनिवर्सल तो नहीं दिया हुआ, दिस विल नॉट बी द आंसर, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, पीपल, सेकुलर, रिपब्लिक, ठीक है। अब प्रियम्बल हमें पता होगा तभी हम इसका आंसर कर सकते हैं सीक्वेंस के हिसाब से। सो इसमें क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ये क्या प्रियम्बल एक बार देख लो और वहां से आप इसको कर सकते हो, मतलब प्रियम्बल में किस सीक्वेंस में दिया हुआ है सारा का सारा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, फेडरल। अब जो फेडरल टर्म है वो नहीं दिया हुआ है, आंसर इज डी, ठीक है। अब ये हमारा प्रियम्बल, आप इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। पहले क्वेश्चन में प्रियम्बल ही दिया हुआ था, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, सो यू कैन सी ओवर हियर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, okay, these things is given, federal is not given. Next, in which form is India declared in the preamble of the Indian Constitution? A sovereign democratic republic, a socialist democratic republic, sovereign socialist, socialist वाला तो हटा ही दो, वो नहीं होगा। इस सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब देखिए इसमें डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर 26 जनवरी 1950 बोलता तो ऑब्वियसली ए इसका आंसर हो जाएगा, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से डिक्लेयर है तो इसके हिसाब से हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। जब डेट दे देगा तो हमें वो अमेंडमेंट को ध्यान में रखना होगा कि वो अमेंडमेंट हुआ था, उसके पहले की पूछ रहा है, उसके बाद का पूछ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से वही पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेकुलर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको अगर प्रियम्बल याद है तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आप प्रियम्बल कम से कम 10-20 बार पढ़ लो। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। सबसे पहले आएगा सोवरेन, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक एंड देन सोशलिस्ट। सॉरी, नो, दिस आई थिंक माय मिस्टेक, आंसर इज ए। ओके, सो पहले हमारा आएगा सोवरेन, ठीक है, देन उसके बाद सोशलिस्ट, देन सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक।
ओके, सो द आंसर इज ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ओके, फिर से आई थिंक वही क्वेश्चन पूछ रहा है, नो अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव बीन एडेड in the preamble by 42nd amendment? Okay, socialist, secular, sovereign, ग्राम स्वराज। ओके, सो अब इसका आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है इसमें ना सोशलिस्ट एंड सेकुलर ऐड हुआ था, ये दोनों नहीं हुए थे, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा।